So guys, here is a quick summary of the changes that have been suggested by ICAI in its draft regulations, and I'll quickly summarize them. One is, so far as the articleship is concerned, as you all know, articleship जो पहले 3 साल की हुआ करती थी अब 2 years की होगी, लेकिन ये 2 साल की आर्टिकलशिप के एटलीस्ट 6 months बाद ही आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हैं. सो इफेक्टिवली 2 years एंड उसके बाद 6 months के बाद आप सीए फाइनल दे सकते हैं. सो फार एज जो सीओपी अगर आपको लेना है तो उसके लिए इंस्टीट्यूट हैज प्रपोज्ड के एटलीस्ट 1 साल आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन, दैट इज सीए बनने के बाद आपको एटलीस्ट 1 साल किसी एफसीए के अंडर करना पड़ेगा काम. ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. ऑब्वियसली वेरी वेलकम चेंज, एंड आई थिंक यहाँ पे हम लोग को इंस्टीट्यूट को और पुश करना चाहिए. बट a welcome change still is कि जो स्टाइपेंड है, मिनिमम स्टाइपेंड has been doubled. I think earlier which was 2000 for the first year has been 4000 and so on and so forth. अगेन आर्टिकलशिप के सो फार एज आर्टिकलशिप इज कंसर्न, इंटर पहले एक ग्रुप या 2 ग्रुप एनी वन ऑफ द ग्रुप्स आप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप चालू कर सकते थे. बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे ये है कि इंस्टीट्यूट ने बोला है ओनली इफ यू क्लियर बोथ द ग्रुप्स ऑफ योर इंटरमीडिएट कैन यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप. सो दैट इज अ वेरी बिग चेंज दैट द इंस्टीट्यूट हैज ब्रॉट. सीए फाइनल में जो पहले 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 6 सब्जेक्ट्स. 2 सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन रिमूव्ड आर लॉ एंड एससीएमपी, both of which will now be included in self-paced online modules. And इसके सिवाय जो पहले electives हुआ करते थे उसमें electives की जगह now there will be no option and there will be an integrated business solutions paper as paper 6, जिसमें the students will be expected to have a thorough knowledge of everything by giving that one paper. I think this might be on similar lines of the multidisciplinary case study paper which was there earlier. Apart from that, so far as paper pattern is concerned, institute objectives ला रहा है at least 30% in all the papers. Also another big changes, ये objectives 30% आएंगे, उसके साथ साथ इन objectives में wrong question के लिए, like rather wrong answer के लिए there will be a negative marking of 25% जो पहले CPT में हुआ करता था etc. So this I think is a major change. And one more major change so far as the exams is concerned, CA final, is there will be a restricted open book exam, which means कि restricted का meaning है कि Bare Act आपको दिया जाएगा and Bare Act में से you have to like you can refer the Bare Act during exams. So far as CA Inter is concerned, again 8 के 6 subjects की है, EIS has been removed, 2 accounts have been merged into one, and उसमें से कुछ chapters foundation में डाल दिए और से कुछ chapters remove कर देंगे. So that way there are now 6 subjects. FM and SM, that is financial management and strategic management को merge करके एक पेपर कर दिया 50 marks each. Again objectives इंटर के सारे पेपर्स में भी इंस्टीट्यूट ला रहा है with the same negative marking concept as CA final. But except for इंटर के केस में closed book exam ही रहेगी as it is today. Self-paced online module will be 4 sets. जो पहला सेट है that will be economic laws because corporate law पूरा का पूरा इंटर में मूव कर दिया है CA फाइनल का. So the other laws, economic laws would be FEMA, RERA, etc. Second set would be SCMP जो अभी CA फाइनल का पेपर 5 है. The third set will be again elective, जिसमें इंस्टीट्यूट is proposing a lot of new electives such as forensic audit, etc., risk management, forensic audit, international taxation, etc., etc. And the fourth set will be, which is a very welcome change, ये national education policy of 2020 के lines पर है, जिसमें you get to choose again an elective paper, whether it could be constitution or philosophy or psychology, and institute are asking for your suggestions if you want any other subject to be included here. I think this is a very very welcome change because something like constitution every Indian should know and definitely see students for sure. Last but not the least is CA Foundation, 4 subjects के 4 subjects ही रहे हैं, except for the fact that इंटर के जो other laws रहते थे, contract act, negotiable, वो अब फाउंडेशन के laws में आ जाएगा. And फाउंडेशन laws के साथ जो commercial correspondence होता था, that is now removed and वो एक online recommendatory course बना दिया जाएगा. अगेन एक बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज करके सब्जेक्ट रहता था सीए फाउंडेशन में, उसको रिमूव कर दिया है इंस्टीट्यूट ने. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंटर के अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स विल नाउ बी मर्ज्ड एज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन अकाउंट्स. वन मेजर चेंज फाउंडेशन के एंगल से इज जो पहले ईच सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स वर 40 एंड एग्रीगेट वर 50, वो अब सारे सब्जेक्ट्स में यू विल हैव टू स्कोर मिनिमम 50 मार्क्स टू क्लियर सीए फाउंडेशन, विच मीन्स कि टू एन एक्सटेंट इंस्टीट्यूट हैज मेड सीए फाउंडेशन comparatively more difficult as compared to earlier. इसके सिवाय major changes are the fact that so far as like 2 exams a year are concerned, they will be increased to 3 exams a year in a shorter period of time, like maybe after the 1 or 2 attempts after the new course has been introduced. Again इसके सिवाय institute has mentioned कि computer based examinations in the longer run लेके आएगा institute
not in the shorter run, obviously in the longer run, is something that the institute has mentioned. इसके सिवाय आई थिंक एग्जेम्पशन वाला एक पॉइंट इज आई थिंक अ वेरी मेजर पॉइंट जिसमें इंस्टीट्यूट से इसके 3 attempts तक यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर एग्जेम्पशन एंड 4th attempt onwards आपका एग्जेम्पशन तो रहेगा ही बट नाउ यू विल हैव टू स्कोर एटलीस्ट 50 marks in all the other subjects apart from the, or rather let me put it the other way, you will have to get aggregate of 50% marks in the other subjects apart from the exemption. Obviously आपके पास ये exemption को drop करने का भी option है. I think all in all, one thing that I take away from here is while Institute definitely is not cutting down the course of CA, it definitely is making it more streamlined and more logical. But yeah, I think any change and even a change for better is accompanied by slight discomfort. So yeah, there will be slight discomfort, but I think this is for the larger good. So that's all for the summary. Thanks a lot for watching.